Hello there, everybody. Welcome back to the channel. Today we're going to be watching an Abhi and Niyu video. This one in particular, as it popped out to me right away. America hates India. Reason? Question mark. Scams. Indian scammers are destroying India's image. Well, I wanted to watch this video because I have had contact with a Indian scammer before, and yeah, so I was thinking that I could probably give my perspective as an American on probably what he says in the video. So yeah, without further ado, let's go ahead and get into it. If you want to watch this video directly, the link to the channel will be in the description down below. So make sure to go and check that out. Anyways, on we go. You Indians, you are scammers. Really? सुनकर बुरा लगा, मुझे भी लगा था। 2 साल पहले अमेरिका में मुझे देखकर किसी ने यही चिल्लाया। Fake call center racket. इंटरनेशनल फर्जी कॉल सेंटर फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। More than 15,000 victims. This investigation has led now to the arrest of dozens of scammers in India. This is unfortunately a very, very common thing. Typically, they target older people, people that aren't, I don't know, as caught up in the know when it comes to these sort of things. You know, you'd think about it like back in the early 2000s, you'd get like emails or spam mail from like Nigerian princes that, you know, oh, give me some money and I'll give you back tenfold or something. And it still happens, right? There's a lot of scam calls out of India, a lot of scam calls out of Africa. I mean, you get scam calls out of anywhere, to be honest with you. But yeah, I think unfortunately India has a very, very bad reputation with scam calls. And I'm trying to think. I think the only reason, the really big reason why that is because there is a lot of people, a lot of YouTubers that actually like troll the scam callers, and I don't know, their videos get millions of views, and typically it's like 99% of the time the calls are from India, unfortunately. But yeah, let's continue this video. आज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अडोबी जैसे कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं, फिर भी भारत की इमेज यही है, इंडियंस आर स्कैमर्स। YouTube पर स्कैम कॉल्स सर्च कीजिए, आपको कई वीडियोस Oh, wow. मिलेंगे और इन सारे वीडियोस So he's even showing off some of the videos, I guess. में इंडियंस ही स्कैम Oh yeah, that's the guy, Kit Boga. He's like the most popular one. This is a short with 18 million views. That's crazy. But yeah, no, his channel's always really big. स्टर्स होते हैं। और तो और एक शहर का नाम बार बार रिपीट होता है, कोलकाता। एक जमाने में कोलकाता भारत की कल्चरल कैपिटल हुआ करता था। न जाने कितने आर्टिस्ट, पोएट्स, साइंटिस्ट, ऑथर्स, फिल्म मेकर्स बंगाल ने हमें दिए, लेकिन आज कोलकाता देश की स्कैम कैपिटल बन चुका है। Kolkata is the scam capital of the country? Interesting. Also, बंगाल ने हमें दिए, लेकिन आज कोलकाता it's interesting that we get, I don't know. This just seems so weird that they'd have like these like big office spaces just full of people doing scam calls, right? Like that seems very, very odd. But it's true. It's true. There's a YouTuber that I watch that that actually like gets access to their network and usually calls like the local police on them. But he also gets access to like the camera systems and stuff and watches them and follows them around. It's weird. की स्कैम कैपिटल बन चुका है। YouTube पर जिम ब्राउनिंग, स्कैमर Yeah, Jim Browning. पेबैक, मार्क रोबर जैसे I don't know scammer payback. चैनल्स ने न जाने कितनी बार स्कैमर्स की लोकेशन पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पुलिस को बताई है। लेकिन स्कैम सेंटर्स That's literally the video that I was just talking about, where he just basically just traces back their IP address and then does some social engineering, kind of what this like the scammers do, but back towards them, where he can like follow them via like Facebook or Instagram, stuff like that. Like if as soon as he finds out the name of like a particular person, it's easy to trace you back. Yeah. आज भी भारत की इमेज दुनिया भर में बर्बाद कर रहे हैं। चलिए समझते हैं कि कोलकाता देश की स्कैम कैपिटल क्यों बन रहा है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। चैप्टर 1, स्कैमिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। चलिए नंबर्स से शुरुआत करते हैं। भारत के स्कैम कॉल सेंटर्स हर दिन 3000 करोड़ का बिजनेस करते हैं। 3000 करोड़ एवरी डे।
यानी ये It's a स्कैम lot. कॉल सेंटर्स मिलकर हर दिन एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बना सकते हैं। हर 3 दिन में विजय माल्या ने लूटा हुआ सारा पैसा लौटा सकते हैं। हफ्ते भर में अटल सेतु बना सकते हैं। और इन स्कैम सेंटर्स की कैपिटल है right in the heart of India. Kolkata. 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 Kolkata, India. जिम ब्राउनिंग एक यूट्यूबर है जो ऐसे स्कैम कॉल्स एक्सपोज करते हैं, उनके आईपी एड्रेस को ट्रैक कर Yeah, see, okay. Yeah, they're explaining how Jim Browning traces people back to the area. कि उनकी लोकेशन एक्सपोज करते हैं और लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म भी करते हैं। उन्होंने कहा कि 95% स्कैम कॉल्स इंडिया से People who work to expose scammers are called scam baiters, and Browning told news site that The Print in that over 95% of global scam calls originate from India. 95% of global scam calls originate from India, according to Jim Browning. I mean, he is, I would quote unquote, I guess, a professional when it comes down to tracking down these scammers, but wow. Citing his database of IP addresses, he said that he originate specifically from in and around Kolkata and New Delhi. Wow. आते हैं। मार्क रोबर ने कुछ साल पहले ऐसे ही एक कॉल सेंटर के कंप्यूटर में हैक करके देखा तो उन्हें पता चला कि उनका डेली टारगेट $65,000 A daily target of 65,000 USD. Wow. था, यानी 52 लाख रुपए डेली। और ये एक कॉल सेंटर है जो हफ्ते के 5 दिन ऑपरेट करता है। इमेजिन ऐसे 100 से ज्यादा स्कैम कॉल सेंटर्स ओपन हैं इंडिया में। एफबीआई ने एक डेटा रिलीज किया जो कहता है कि भारत के स्कैम कॉल सेंटर्स ने अमेरिका से $10 बिलियन लूटे हैं और वो भी सिर्फ एक साल में। That's a lot of money. That's a lot of money. That's a lot of old people getting scammed. Like legit. Like the majority of the people that are getting scammed are the old and the technological illiterate, I guess. And like I said before, I had a couple people call in and try to scam me. Of course, I knew ahead of time it was a scam, so I played along. I faked an accent. I'd never recorded this or anything, but yeah, I did, watch some scam baiters before, and I was playing up the whole thing for a little while. And then they got upset and they hung up. But yeah, I should have recorded it, but I don't know. That's not something that I ever did, and I don't get scam calls anymore. So yeah, I guess it's not. I don't know. Crazy, huh? पिछले साल ईडी ने वेस्ट बंगाल में मेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को बंद करवाया। कुणाल गुप्ता नाम के किंग पिन को पकड़ा भी और कुल मिलाकर 67 करोड़ के एसेट्स जब्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग यहाँ काम क्यों करते हैं? क्योंकि शुरू में Why do ये people कॉल work here? Exactly. Why do people work there? I would assume people work there because getting a legitimate job is hard. I don't know. सेंटर्स लेजिटिमेट कॉल सेंटर्स लगते हैं। अगर आप अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोल सकते हैं, बाय दैट आई मीन आप आर की जगह आर बोल सकते हैं, देन यू आर हायर्ड। और शुरू में आपकी सैलरी क्या होती है पता है? 5,20,000 रुपए पर ईयर, नहीं पर मंथ। और इतनी सैलरी में आपका काम सिर्फ एक ओपनर का काम होता है, जहां आप पैसों की वसूली करते ही नहीं, क्लाइंट को बस आइडेंटिफाई करते हो और वसूली के लिए आपके सीनियर को कॉल फॉरवर्ड करते हो। असली स्कैम सीनियर करता है, जिसकी मंथली सैलरी 12 लाख रुपए होती है। सोचिए, Wow. एसी रूम में बैठकर कुछ घंटे फोन पर बात करके अगर आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो तो I like how they had to label this as AI generated. That's interesting. नियत सबकी गिर ही जाती है। सोचिए, अगर आप एक रात में उतना पैसा कमा पाए जो आप पूरे साल मेहनत करके नहीं कमा सकते, तो करना कुछ नहीं है। अच्छी इंग्लिश आती है, स्क्रिप्ट पढ़ सकते हो, तो 1 घंटे में 10 कॉल करने हैं। एटलीस्ट 2 बंदे। And that's the thing. It's like these scammers aren't. They're just reading. They call. They read a script. They stick to the script. They repeat the script. So even if the person they're calling has like questions or is fighting against them, they just keep sticking to the script. Yeah. I don't know, man. It's scummy. It really is. फंस ही जाएंगे। चैप्टर 2, पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती? I don't think the police do anything.
I legitimately don't think the police do anything to stop them. स्कैमर पेबैक हर वीडियो में किसी स्कैम कॉल सेंटर में हैक करता है और 10 में से 9 बार स्कैम कॉल सेंटर कोलकाता का ही होता है। कोलकाता में इतने स्कैम कॉल सेंटर्स क्यों हैं? कई रीजंस हैं। कोलकाता के प्रॉपर्टी रेट्स दूसरे मेट्रो सिटी से कम, तो स्कैम कंपनीज के लिए interesting, okay. यहाँ आईटी पार्क्स में प्रॉपर्टी रेंट करना, सेटअप करना और पुलिस के नजर आने पर वहां से उड़न छू हो जाना आसान है। दूसरा रीजन Okay, all right. So it's in Calcutta because it's cheaper to get these big office complexes, and if your IP address gets leaked out, if the police start catching on, you can easily just pick up and move and go and get another place for cheap. Okay. है अनएम्प्लॉयमेंट। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में प्राइवेट जॉब्स की कमी है, यानी यहाँ के युवा के पास अपॉर्चुनिटी। Yeah, and that was going to say, this is what I was going to say as well. Jobs probably are very, very difficult to come by in and around the area, like legitimate jobs. So what are these people meant to do? Well, they start going more towards these shady things like this. बहुत कम है, तो इंग्लिश बोलने वाले जरूरतमंद एम्प्लॉइज ढूंढना आसान है। जहाँ बेंगलुरु हमारी सिलिकॉन वैली बन चुकी है, कोलकाता हमारी स्कैमर वैली है। स्कैमर्स के लिए पुलिस से बचने के बहुत तरीके। एक है घूस खिलाओ। एक रेडिट पोस्ट तो ये भी कहती है कि पुलिस को Cops are easy to bribe. See? And that's what I was saying as well. I'm sure like the cops don't even really do anything. They're probably getting a cut out of it to begin with. ब्राइब देना यहाँ पर आसान है। वेल आई नो नथिंग अबाउट इट क्योंकि मैं कोलकाता में रहता नहीं हूँ। अगर आप बंगाल से हैं तो मुझे बताइए, क्या बंगाल इतना करप्ट है? दूसरा तरीका है अपने एम्प्लॉय से एक्चुअल कॉल सेंटर्स का काम भी करवाओ और दिन में कुछ ही घंटे स्कैम कॉल करवाओ। तीसरा तरीका है पुलिस को लोकेशन का पता चलने पर बोरिया बिस्तर उठाओ और शिफ्ट हो जाओ। ऐसे कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जहां स्कैम कॉलर्स एक दूसरे को रेड से पहले वार्न करते हैं। Those nails were rough. Was that also an AI generated? This is also AI generated. You can tell because this iPhone is this design is not real. But man, I was gonna say whoever's nails those are rough nails. But it's AI. So कई बार पुलिस एक्शन लेना चाहती तो है, लेकिन उन्हें प्रूफ नहीं मिलते क्योंकि विक्टिम्स देश के बाहर होते हैं। कुछ रेयर केसेस में स्कैमर्स को सजा होती भी है, जैसे 2000 the subtitles stopped working, I guess. में जर्मन पुलिस। All right, a rare example in which international authorities got involved was in 2017. Kolkata police arrest 5 people after the German police notified them of a phishing scam. A German prosecutor flew to India to argue the case, and the accused were sentenced to 9 months in prison. It is the longest sentence for scam callers yet, according to Sharma. It took a German prosecutor to fly out to India to ensure that these people got a jail sentence. इन्वॉल्व हो गई। जर्मन प्रोसिक्यूटर खुद भारत आए और कोर्ट में हाजिर हुए, तब जाकर स्कैमर्स को 9 महीने की जेल हुई और पैसे जब्त हुए, लेकिन सजा सिर्फ 9 महीने की ही हुई। FBI और इंटरपोल ने स्कैमर के अगेंस्ट एक्शन लेने की सोची। उन्होंने दिल्ली पुलिस की मदद ली और यूएस एम्बेसी में एक परमानेंट टीम बनाई। FBI, इंटरपोल, दिल्ली पुलिस, यूएस एम्बेसी भी इन्वॉल्व होने के बाद क्या स्कैम कॉल सेंटर्स बंद हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि मनी ट्रेल I mean, they weren't. I read that wait, hold on. What is this? टीम बनाई। Oh, a FBI, permanent team. Okay, I was gonna say I missed the permanent team part. Okay, so they have a permanent team in इंटरपोल, दिल्ली New पुलिस, Delhi? यूएस एम्बेसी भी इन्वॉल्व होने US के बाद Embassy, okay. क्या स्कैम कॉल सेंटर्स बंद हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि मनी ट्रेल एस्टैब्लिश करना आसान नहीं है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर अमेरिका में किसी को स्कैम किया तो पैसे सीधे स्कैमर के अकाउंट में नहीं आते। सबसे पहले पैसा कन्वर्ट होता है बिटकॉइन में। अमेरिका में ऐसे बिटकॉइन एटीएम्स होते हैं। स्कैमर्स अक्सर विक्टिम्स को बिटकॉइन एटीएम में पैसा डिपॉजिट करने के लिए कहते हैं। This is a newer thing, Bitcoin ATMs. They haven't been around for a long time, but yeah, this is a newer, less traceable form of scamming people out of it. I know back, for like the past, however many years, 20 years plus, whatever, it's usually gift cards, right? Because that's also another form of currency that can be transferred between hands without, a line going back and connecting the two.
फिर पैसा जाता है स्पेन, स्पेन से पैसा जाता है रशिया, रशिया से मॉरिशस और फिर मॉरिशस से आता है भारत। Really? Okay. So it bounces between these different countries, and I'm assuming Mauritius is like a tax haven, probably. यानी बीच में पैसा इतने देशों में इतने अलग अलग करेंसीज में घुमाया जाता है कि कौन सा पैसा कौन से बैंक में है पता ही नहीं चलता। सोचिए, रशिया की अथॉरिटीज एफबीआई की हेल्प क्यों करेंगी? जब तक मनी ट्रेल प्रूव नहीं होती तब तक स्कैम कॉल सेंटर्स बंद नहीं हो सकते। हमारा जस्टिस सिस्टम कुछ ऐसा ही है। सच दिन के उजाले जितना साफ क्यों ना हो, अगर अलार्म बजने का प्रूफ नहीं है तो आंखें मूंद कर सबको सोने की अनुमति है। चैप्टर 3, इंडिया की इमेज। मार्क रोबर मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स में से एक हैं, क्योंकि वो स्कैमस्टर्स को ऐसे ग्लिटर Oh yeah, the glitter bomb stuff. I've actually seen one of these glitter bombs where it got sent to someone in like Georgia, because they also have people that scam from the U.S. as well. It's not just India. Like I said, it's all around the world. It's just I guess the vast majority of them are from India. But yeah, like it got sent to somebody in Georgia who was going to send it somewhere else, and I think it was like, I don't know, it was supposed to be some sort of like iPhone or something. बॉम्ब से प्रैंक जरूर कहते हैं, उन्हें सजा भी दिलाते हैं, लेकिन ये भी समझते हैं कि एक क्रिमिनल को क्रिमिनल बनाने में कई फैक्टर्स होते हैं। वो कहते हैं कि कई अमेरिकन सिर्फ ऐसे स्कैम कॉल्स के थ्रू इंडियन से इंटरैक्ट करते हैं। और Many अगर Americans एक फोन only कॉल interact with Indians through such scam calls. I guess if that's the case, then yeah, a lot of Indians or a lot of Americans are going to have a negative take on India and Indians in general, which is probably why we see a lot of racism online. Let's be honest, right? Like Twitter is exploded with Indian racism, and it's terrible. Yeah, I guess most Americans aren't like me and that try to go and learn as much as you can about other countries. Okay. के बाद अगर किसी का पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, ऐसे लोग जो रिटायर्ड हैं, बूढ़े हैं, 70-80 साल के हैं, जो अकेले रहते हैं, तो उनकी इंडियंस के बारे में इमेज क्या बनेगी? वो तो यही सोचेंगे कि सारे इंडियंस ऐसे ही है। रेसिज्म की शुरुआत ऐसे ही होती है। स्कैम बेटर ने एक ऐसा इंसिडेंट एक्सपोज किया जो सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक स्कैम कॉल के दौरान स्कैमर को पता चल गया कि जिस महिला को Scam Baiter recounted another incident in which a scammer tried to sexually exploit an elderly lady when he realized she didn't have much money to scam. He tried to force her to strip down on camera to stop her Amazon order. What? वो स्कैम करना चाहता था, वो उसके बैंक में पैसे है ही नहीं, तो उसने क्या किया? फोन काटा नहीं, उसने उस महिला को मैनिपुलेट किया। उसने कहा कि वेबकैम चालू करो और अपने कपड़े उतारो। उसकी गंदी तस्वीरें ली और इंटरनेट पर अपलोड की। क्यों? सुनकर शर्म आती है, घृणा आती है कि ऐसे इंडियंस भी हैं जिन्हें हम हमारे भाई मानते हैं। हम कहते हैं ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो ये डिजेनरेट्स भी हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, जो सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं, मजे के लिए भी दुनिया को ठगते हैं, और तो और भारत की इमेज खराब करते हैं। और सिर्फ इमेज की बात नहीं है दोस्तों, मल्टीनेशनल कंपनीज में कस्टमर सपोर्ट के लिए किसी भी इंडियन एक्सेंट वाले इंसान को लेने से पहले 2 बार सोचा जाता है। Yeah, that's I was gonna say. After some of this was, it just gives people a bad image, and a lot of these companies that typically would hire, out of India, who may look elsewhere in the future. है। यानी कुछ इंडियंस की डिसऑनेस्टी की सजा दुनिया भर के ऑनेस्ट इंडियंस भुगतते हैं। दुनिया भर में इंडियंस Horrific racist attack in Texas. You Indians are everywhere. Racism now convert, says Indian Oxford student facing backlash over racist. Racism against Indian student in Oxford figures in RS. As Indians face racist attacks in US, Desi something racism they face within के India. अगेंस्ट रेसिज्म के किस्से बढ़ रहे हैं। इसके लिए आप इंडिविजुअली जिम्मेदार नहीं है, लेकिन एज अ सोसाइटी हमारी इनएक्शन जिम्मेदार जरूर है। तो हम क्या कर सकते हैं? चैप्टर 4 सॉल्यूशंस। अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहले समझना होगा कि I don't think there's a solution.
I really don't. Unless there's like a major reform in a lot of sectors, job sectors, police sectors. I don't see any solution. ये प्रॉब्लम होता ही क्यों है? चलिए समझते हैं कि ये स्कैम कॉल सेंटर्स अमेरिका को बेवकूफ कैसे बनाते हैं। पहले आपको एक ईमेल आता है कि आपके अकाउंट से एक $200 का Amazon ऑर्डर प्लेस हुआ है। अक्सर Amazon, Microsoft जैसे रेप्यूटेड कंपनीज Yeah, that's the thing. A lot of people are technology illiterate, are just illiterate when it comes to computers in general, especially when it comes to like emails and such. You can see these scam emails from a mile away. Like it is so easy to see. I always tell people, just don't click on anything. If you get an email from a website, like a Google, YouTube, Microsoft, Amazon, any of these, just go directly to the website. Don't click on the link that's in the email. That's silly. That's how a lot of these YouTubers, you see those YouTubers that get their accounts hacked and they get switched over to like a Bitcoin scam, right? With Elon Musk's face on all over it. It's because these YouTubers, they get an email from YouTube and they click on it, or they get an email from like a sponsor and they click on the link that is sent to them, and it just copies all their cookies on their machine, and then bam, the person has access to all their emails, passwords, stuff, and get onto their YouTube account, stuff like that. के नाम को यूज करके स्कैम कॉल्स आते हैं। उसी ईमेल में एक नंबर दिया होता है जो स्कैम कॉल सेंटर का नंबर होता है। फोन उठाने पर आपको एक सवाल पूछा जाता है, आर यू अबव 65 years? क्योंकि बूढ़े लोग टेक्नोलॉजी They ask if the people are above 65 years. Interesting. Again, subtitles stopped working, but I think I understand. से डरते हैं और जल्दी पैनिक हो जाते हैं। अगर आपने 1 डायल नहीं किया तो आपका कॉल डिस्कनेक्ट होता है, क्योंकि स्कैमर्स को पता है कि किसी यंग बंदे पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है किसी बूढ़े को फंसाओ। एक नंबर डायल करने पर एक जूनियर लेवल स्कैमर आपका कॉल उठाता है, जिसका काम ही होता है आपको डराना। ऐसे जूनियर लेवल स्कैमर्स महीने के $7,000 यानी 5,60,000 रुपए कमाते हैं। फिर आपको सफिशिएंटली डराने के बाद वो कॉल सीनियर स्कैमर्स को देते हैं, जो महीने के $15,000 यानी 12 लाख रुपए भी कमाते हैं। ये उनकी खुद की सैलरी है, तो इमेजिन कीजिए कि वो कितने लोगों को कितना चूना लगाते होंगे। फिर शुरू होता है ब्लैकमेल। कैसे? जरा इस स्कैम कॉल को सुनिए। You're like my granny, Miss Bessie. Do you know this? Yes. Plus 20,000. Please save my job, ma'am. If I'll not earn for my family will die due to hunger, due to starvation. Please, Yes, ma'am, of please course. don't I mean, cry. Please what don't should I cry, do? ma'am. I mean, I I'm can, feeling bad for you. You are also like my grandmother. I'm an honest You are person. making me cry now. आपको फिजिकली कैश विड्रॉ करके स्कैमर्स को भेजने बोला जाता है। इमोशनल ब्लैकमेल होता है कि अगर आपने ऐसा That's disgusting. नहीं किया तो कॉल सेंटर वाले की नौकरी चली जाएगी। इमोशनल मैनिपुलेशन में ये सारे स्कैमस्टर्स एक्सपर्ट होते हैं। सॉल्यूशंस 3 लेवल पर है, एक इंडिविजुअल लेवल पर, दूसरा गवर्नमेंट लेवल पर और तीसरा सोसाइटी लेवल पर। इंडिविजुअल लेवल पर वी हैव टू मेक श्योर कि हम किसी भी तरह के स्कैमर कंपनी से एसोसिएटेड ना रहें, यानी उनके एम्प्लॉय ना बने। चोरी डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली, चोरी चोरी ही होती है। इस बात को हम सबको समझने की सख्त जरूरत है। गवर्नमेंट लेवल पर एक स्ट्रिक्ट कैंपेन रन करने की जरूरत है। सरकार को इन एरियाज के बारे में पता है जहां से I just don't see this being as such a huge importance at this point in time. Unfortunately, I don't know how. I just don't know. I don't know. I just don't know. कॉल सेंटर्स ऑपरेट करते हैं, वहां के प्रॉपर्टी ओनर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। Property owners should be held responsible for the tenants. That would force the property owners to engage in more background checks, which would thus force the property owners to increase the amount of money that it costs to rent the place. So that can do more harm to non-scammers trying to rent the property. So कि आप किस बिजनेस के लिए अपने प्रेमिसेस दे रहे हो। कोई भी प्रॉपर्टी ओनर अगर टेनेंट को अपनी प्रॉपर्टी देता है और उस प्रॉपर्टी में ड्रग्स बनाने का कारखाना drug manufacturing. आना शुरू होता है, तो क्या पुलिस प्रॉपर्टी ओनर को जिम्मेदार नहीं मानेगी? I guess. I mean, maybe. I don't know. जरूर मानेगी। तो यहाँ हम इतने रिलैक्स्ड कैसे हो सकते हैं? अक्सर एम्प्लॉइज की हायरिंग टेलीग्राम पर होती
Hello, I'm Hannah from HR Recruitment at Marketing. My company is hiring online part-time employees. Our work is simple and free. Can I send you the job details? The job is to help major YouTubers and business grow their followings. You just need to open YouTube search, subscribe, and send me a screenshot. Get paid simply by being a subscriber to the business. You will instantly get a reward of RM10 per task. For a day, you can earn up to 15 to 200 RM. How often will I be paid? Is it immediate after the task or weekly or something? Once you complete task, you can get the payment within 5 to 10 minutes. This is day-to-day payment transfer. From your understanding purpose, I will give you 2 channels to subscribe. Once you complete, you will get RM30. होती है सरकार को ऐसे The 17th task, follow this user on Instagram by clicking the link. Task time 30 minutes, yada yada yada. Complete the task, get INR 50, Indian Rupee 50. Okay. टेलीग्राम ग्रुप्स पर एक्शन लेने की सख्त जरूरत है। इनफैक्ट टेलीग्राम को एज अ कंपनी सोचना चाहिए कि उस ऐप पर इतनी पायरेसी, इतने स्कैम्स क्यों हैं। एट द सेम टाइम एक्स एम्प्लॉइज को इंसेंटिवाइज करना होगा कि वो खुद इन स्कैम सेंटर्स के अगेंस्ट आवाज उठाए। उन्हें अगर प्रोटेक्शन मिलेगा तो शायद The subtitles just don't like to work when she's talking. It's weird. वो खुद गवाही दे सकते हैं और पुलिस की मदद भी कर सकते हैं। और नंबर 3, सोसाइटी लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को क्रिमिनल बना सकता है। This still not देश working. में हर साल 20 मिलियन जॉब्स की जरूरत है और हम सिर्फ 5 मिलियन नए जॉब्स बना सकते हैं। बाकी के 15 मिलियन लोगों को जॉब्स मिलने वाले नहीं हैं। अनएम्प्लॉयमेंट देश के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस होने वाला है, जो कई सारे ऑनेस्ट लोगों को भी क्रिमिनल बनने पर मजबूर करेगा। हमें स्कूल में किताबी एजुकेशन से ज्यादा मॉरल एजुकेशन की जरूरत है। हमें मॉरल्स कभी सिखाए ही नहीं जाते। टाइम पर आना, Morals taught in school. किसी से झूठ ना बोलना, दूसरे के दर्द को समझना, ये हमें कभी सिखाते ही नहीं। मेरे जिम के पास एक पुलिस स्टेशन है जहां एक लाईन लिखी हुई है, कोणी बघत नसताना आपले काम प्रामाणिकपणे करणे हीच खरी प्रामाणिकता। जब सब देख रहे हैं तो हर कोई ऑनेस्ट ही होता है। When everyone is watching, everyone is honest. अगर सिर्फ और सिर्फ पकड़े जाने का डर आपको ईमानदार बनाता है तो आप ईमानदार कैसे? जब कोई नहीं देख रहा तब भी जो ऑनेस्ट है वही असल में ईमानदार है। ये बात स्कूल लेवल से ही सबको सिखानी होगी। एजुकेशन लेवल से ही हमें इंडियंस को मॉरल बनाना होगा। हम मटेरियल वेल्थ पर फोकस करते हैं, बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, ऊंची बिल्डिंग में घर, सक्सेस इसे ही कहते हैं। फिर वो सक्सेस चोरी की हुई सक्सेस ही क्यों ना हो। ऐसे करते करते इंडियंस फाइनेंशियली रिच तो हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली हम गरीब ही रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो ऐसे स्कैमर्स को एक्सपोज करने में हमारी हेल्प कीजिए, भारत की इमेज सुधारने में हमारी हेल्प कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमें विश्वास है कि अगर इस एक वीडियो से हम एक युवा को स्कैमर बनने से रोक पाए, एक स्कैमर को स्कैम की दुनिया से बाहर निकाल पाए, एक पुलिस ऑफिसर को एक्शन लेने पर मजबूर कर पाए, तो शायद भारत की इमेज 1% ही क्यों ना हो, हम बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है। और इन 2 लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है। Hey दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डार्क वेब क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। Dark web अगर आप चैन की exposed in Hindi. नींद सोना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ रहा है। Interesting. Okay. Yeah. They went over a lot of things that I already knew. I mean, I guess I didn't know that 95% of scam calls came out of India. I didn't know that, but yeah, for the most part, I knew all of this. And yeah, as far as like solutions and stuff, it would just take massive reforms across many sectors, right? You got to go down to the root of the issue. The root of the issue is, police are easily bribed. There's not enough jobs. People, what are the unemployed going to do? Well, a lot of them tend to go to something like this. Yeah, you keep going back to the roots of it. There's a lot of stuff that needs a bigger overarching change to fix something like this. So it's unfortunate, it really is. Truly is. Let's read some comments, yeah, and see what
some of the other people have to say. Do you think Prime Minister Modi should act on such scam call centers? Tell us in the comments below. Yes, along with strict punishment. Yes, sir, I'm your biggest fan. I saw your almost every video. Wow. I'm a Bengali from Kolkata. This is the reality now. Since 2011, the number of scams have skyrocketed because Bengal government and CM are the biggest scammers. One of my friends is working as a scammer in Delhi. Now he's flexing his status in social media, and here I am jobless. It's okay, bro. Better to be jobless than taking people's hard-earned money. Most of the scammers are from Gujarat, like those who agree. What? It seems you have much knowledge only if you work in a scam center in Gujarat. I'm from Kolkata, and we're protesting against Mamta Banerjee. Again, my pronunciation is terrible. Demanding for her resignation for what happened in the hospital. Yeah. Rest of India support us and save Bengal. They're trying to change Bengal to Bangladesh. Already Bangladeshi Muslims surpassed Hindus in Kolkata. Please save us. Am from Calcutta, and this is so shameful. I too watched those scam baiting channels. West Bengal is doomed in corruption. I'm Bengali, living in the USA since the last 4+ years. And the other day, I got a call from one of the scammers. The guy started with my name and my company name. Also said myself, Robert from Microsoft Invoice Department. With his accent, I started laughing because before I say anything, he hung up. I told this story to my office colleagues, and they were like, how it feels to try your own medicine. That's racist. I felt embarrassed and said most of the scammers are Indians, but not all Indians are scammers. Also asked, do you see these people doing scam to people? It's all about bad people. Then the things went easy. Over the years, Americans used to know Indians as good in science, math, good in culture, food, and easily adjust themselves to American culture. I see it not that far when the USA and other countries would refer to Indians as bad people if things are not addressed now. My mother is a victim of a scam call. Being retired senior citizen, she lost $50,000 of her hard-earned money because of these shameless frauds. Height of the desperation, and after fooling my mom and looting her account, the idiotic fellow suggested to her, never share your bank account details and OTP to anyone. One-time password. My mom was a sharp government employee but got trapped by these thieves. My request, especially old and retired senior citizens, to be vigilant. Yeah, it's just because you're old doesn't mean you need to lack on learning about different things to save yourself, right? I am a Bengali from Kolkata. This is the reality now. Since 2011, the number of scammers have skyrocketed. Oh, did I already read that? I think I did. I'm from New Zealand, and here in my high school, students make fun of Indians saying they're scammers and mimic Indian accents by saying, don't redeem it. To be honest, it's my brother's school. They taught him about the scams, especially about Indian accent scammers. Even till this day, I receive Indian scam texts and emails. Not only me, everyone in the whole country. It's like Indian accent is the most hated accent nowadays, and they always mock it. India's image is already down in New Zealand. Well, that's really unfortunate, actually. That's truly, truly unfortunate. I'm a Bengali, live in Kolkata. Yes, it's an epicenter of crime, scam, and you can do anything if you can get money to so-called police. I know it's a bold statement, but yeah, it's 70% true. Thumbs up. The sad part is these scammers target older or retirement home people who are not well versed with technology and scam them out of their life savings. Such a shameful act. I am from Bengal. Yes, Bengal. I don't know. Okay. Din din gur ti ja raha hai. I don't know. As a Bengali, I can confirm the West Bengal is the most corrupt state in India. By the way, love from West Bengal. I'm from Calcutta. Everything in the video is so true. As a Bengali, I feel so shameful, embarrassed, and disheartened. I'm kind of interested to see what some of the newer comments have to say.
Who is more important, the locals, the state, or the country? The reason is to get rich for immigrants. That the reason why we should change the government around our borders, which are working against the country, please. Okay. The problem is only the core reason, mentality and education. Indian scam. Oh, we gotta do I want to read all that? Yeah, sure. It is looking like an Indian scam, but sir or madam, the people of the spring who wish bad for India or want to loot India, or what is there for those who want to loot? Operation that. But if the Indians themselves take the country's money, then what will it do to their children? Who is saving him? The poor's money or rights also snatched away by Indian people. Before your days, you are in scam. You can see where your friend's money is going. Here people are dying from poverty and disease. Those people are speaking bad about Indian people, but you are also showing one side of the coin. Who will show the other side, sir and ma'am? Is this person saying that... I think this person's like trying to say... I can't read half of what he's written here. But it kind of sounds like he's saying that it's okay to scam people? Okay. Okay. Please search it. Where are the most scam calls from in India? Don't hate Kolkata, please. Okay, let's search it really quick. We'll go ahead and search that. Where are the most scam calls in India? Here's a Reddit. I don't like Reddit, but here's a Reddit thing from 8 months ago. Oh, it's Indian in Pixels image. Interesting. Wow, you really can't zoom in on Reddit? That's lame. But yeah, look, the majority of them are out of Bengal. So, West Bengal. It's unfortunate. I'm from Kolkata. Every building in Sector 5 is now occupied with scammers. The industry is huge and everything good for administration if you have enough budget for extortion. Wow. These scam businesses... Who supports these scam businesses? Does it work like Kim Un-jong? Is India main to India? Who is Kim Un-jong? I don't know what he's trying to say there. I'm from Calcutta. RR totally right in this video. You are totally right in this video, I'm guessing. Calcutta Police and Crime, twin brothers. The British looted us, now we have looted them. Again, you're not... The majority of people being scammed are from the US, not the British. This is an example of empty brains, home of bad thoughts. I got scammed in the name of car wash franchise. I lost 90K. Okay. Jokers make video on Indian cleanliness and traffic chaos? What? This scam is not developing. Hariyama Technology, Kidhar, Tak, whatever that is. I Gaia. This is George Soros' plan. Okay, this is bullshit. Everything, you can't blame everything on George Soros, okay? I'm sorry. You can't blame everything on George Soros. That's actually bullshit. If you want to know how much corrupt Bengal nowadays, please research on it. We are frustrated. When the prime minister of our country has sunk to lowliness, what will he do for a few hours? I don't even know what that means. I don't even know what that means. I think we're gonna be done with the video. Again, if you want to watch the video directly, link to the channel will be in the description down below. Link to the video will be in the description. And yeah, thank you for watching. Remember to like, subscribe, leave a comment, and I'll catch you on the next one. Okay? See you later. Goodbye. Here's another one. What is English Mughals looted back and the Americans are looting now is being reclaimed by Indians. Who is to be ashamed? Again, another person in support of the scamming. Terrible.